तो till yesterday we have seen the limits, है ना, उसमें लिमिट्स हमने देखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू एनी पॉइंट। अभी हम बोल रहे हैं उसको x इक्वल टू a। ओके, तो x इक्वल टू a के पहले वाला पॉइंट हो गया a माइनस एंड जस्ट आफ्टर a इट इज a प्लस। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख के रखा है मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट जब फंक्शन की वैल्यू a के जस्ट पहले हो, a के जस्ट पहले तो a माइनस, a के जस्ट बाद तो a प्लस एंड थर्ड वन इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। ओके, ये जो तीनों चीजें हैं कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, ये रिक्वायर्ड है फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले टॉपिक है कंटिन्यूटी, है ना। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, है ना, वो हम देखेंगे सारे क्वेश्चन। तो आप ये तीन चीज समझ लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, है ना। तो अगर if this left hand limit, if this left hand limit is equal to RHL, that is right hand limit, and is equal to function की value f is equal to a, f of a, ये तीनों अगर इक्वल होती हैं तो उस टाइम पे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस एट a। ठीक है, मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a, अगर ये तीनों सेम है तो ही हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a। इसको लिख लीजिए, जो नया ज्वाइन करेंगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं रख रहा हूँ, जो नए हैं उसको स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। 1 2 3 4 5। ओके, देन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें ये है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f of x इज कंटिन्यूअस at x equal to a if number one, value of function at a, value of function at a is a definite number, is a definite number। ठीक है, डेफिनेट मतलब इनफाइनाइट नहीं हो, है ना, इट मस्ट बी डेफिनेट, डेफिनेट नंबर। नंबर 2, द लिमिट ऑफ फंक्शन f of x a, मतलब f of x की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब LHS इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज इक्वल टू f of x। ये रहेंगे, ये दोनों कंडीशन अगर मैच करेगी तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है। अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर थोड़ा सा स्लो हो रहा है लिखने में। शुभम स्पीड है ना, ये चलेगा ना। अभी ऑडिबल है रूपाली, ऑडिबिलिटी
स्लो है। आप शायद तक ये ईयरफोन यूज करिए तो अच्छा आवाज आएगा, बाकी सब लोग बोल रहे हैं ऑडिबल है। विकास एंड रूपाली प्लीज रिप्लाई। अभी ओके ना? ओके है ना, वो आप यूज करेंगे तो होगा अच्छे से। ठीक है, गुड। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको पहले एक में एग्जांपल से हम समझते हैं कंटिन्यूस का मतलब। देखिए, सबसे पहले अगर इफ वी हैव f of x is equal to mod of x, है ना, whenever function is mod, हम क्या बोलते हैं? it is always positive. What does it mean? When f of x is mod x, it means f of x is plus x when x is greater than or equal to 0, है ना। मैं राइट साइड में इक्वल टू लेता हूँ। एंड f of x is minus x when x is less than 0, ठीक है। मीन्स मैं 0 की पॉजिटिव साइड के लिए इक्वल लेता हूँ, नेगेटिव साइड के लिए इक्वल नहीं लेता हूँ। ओके, तो इसको अगर हम कर्व बनाना चाहें मॉड x का, तो कैसा बनेगा? इट विल बी प्लस x when it is plus x, when it is plus x it will be like this, and when it is minus x it will be like this, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू 0, ये डिपेंड करेगा if it is x इक्वल टू प्लस a, the value of function will be plus a, है ना। okay. So this is the graph of mod x, ठीक है। तो mod x is continuous from minus a to a or minus infinite to infinite. Here we have taken minus a to plus a. So this time function is called continuous. अब कैसे? How we will say it? First of all, we will find out left hand limit LHL. तो LHL क्या होगा? Limit x tends to 0 minus, or before 0 the function was minus x, so it will be minus 0, है ना। वैसे ही आर एक्स एल राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और उस टाइम फंक्शन क्या है? एक्स, दैट इज अगेन 0, दैट इज अगेन 0, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इज 0। Means what conclusion we can make? That our conclusion can be LHL is equal to RHL is equal to f of 0, that is 0 in operation. So function is continuous. The function is continuous. Okay, any issue in this? तो ये function हो गया continuous. नाउ कल मुझे किसी ने पूछा था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर, है ना। यहाँ तक लिखा सभी ने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट वी आर स्टडीइंग दैट कंटिन्यूटी, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इफ इट इज सेम एट LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दैट फॉर्म। तो मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नहीं लिखा है तो, यदि साथ में लिखते जाइए ना इसके लिए। ओके, आई गेस ना। अभी होता है कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट और कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट डज इट मीन? दिस इज आवर लाइन सिस्टम, this is minus infinite, this is plus infinite,
this is 0, this is 0 minus, this is 0 plus. If LHL is equal to f of 0 है, if LHL is equal to f of 0, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट. If L not is equal to RHL, so we will call it continuity from left. Okay, left hand limit is equal to value of function at x equal to at that point. Similarly, if RHL is equal to f of 0 and not equal to LHL, so that time it will be called continuity. So this is continuity from left and continuity from right. So function is continuous at x equal to a. तो उसके लिए क्या होना चाहिए? It must be continuous from left as well as from right. Understood? Then we want function continuous at point A. It must be continuous from left as well as from right. Then only it will be continuous. So then next. And removing it. Okay. So the next is continuity in closed interval. Continuity in closed interval. Closed interval and open interval समझते हैं. Open interval का मतलब है generally represented by this type of bracket, a comma b. This is called open interval. Open interval का मतलब है कि from A to B, but A is not included, B is not included. And if it is closed interval, if it is closed interval, that will be using this bracket. तो उस टाइम पे लिमिट में ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड. अंडरस्टूड? ठीक है. अगर हमसे बोला है कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, व्हाट डज इट मीन? इट मस्ट बी कंटिन्यूअस फ्रॉम एज वेल एज ए एंड एज वेल एज बी, है ना? तो वो ए और बी में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी. इफ इट इज कंटिन्यूअस, इट इज नियर इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो ए प्लस एंड बी माइनस, a plus and b minus. A plus means RHL and b minus means LHL. तो RHL किसके लिए? राइट हैंड लिमिट फॉर A and LHL फॉर B. अंडरस्टूड? मतलब अगर क्लोज इंटरवल A to B में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वो A के राइट में से कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी के लेफ्ट से, है ना? बी के राइट से हमको लेना देना नहीं है, ए के लेफ्ट से हमको लेना देना नहीं है. That time function will be continuous in the closed interval a comma b. Understood? साथ में है, लिखते जा रहे हैं. Okay. है ना? You can take screenshot when he लिखा है तो then clear नहीं है ना? लिखते जा रहे हो साथ में. आइए, तो किसी को पास लग रहा है तो मुझे कैसे बता दीजिए, मैं उसको जल्दी रफ नहीं करूँगा. ओके. p square
सर थोड़ा सा वॉइस आपका धीरे आ रहा है। अभी अभी ओके? नहीं मतलब आवाज थोड़ा लो है। अभी आगे अभी से ठीक। अभी बढ़ रहा है? नहीं अभी भी नहीं बढ़ा। तो आपने ईयरफोन यूज करके रखा है? हाँ हाँ सर। ये सभी को प्रॉब्लम है आपका? देखो सिस्टम का थोड़ा वॉइस बढ़ा के देखो। फुल है सर। तो बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ठीक है, बाकी लोगों का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एक बार आप चेक करो अपने सिस्टम में, अगर कुछ हो रहा है तो, है ना? मैं कोशिश में और जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। ओके है ना? ठीक है, तो कहाँ तक थे हम? ठीक है, तो नाउ let me solve some question on the continuity. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डिफरेंशिएबिलिटी का। नाउ इट इज डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएशन पहले क्या होता है उसको देखते हैं, है ना? नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, नाउ वी हैव वन फंक्शन f of x with respect to x. We have function f of x with respect to x. Let us say some function like this. Now we are finding differentiation at x equal to 0. Now we are finding out the differentiation at x equal to 0. So what we can do, we have three type of differentiation. Number one, differentiation का मतलब क्या है? change in f of x with respect to x. ठीक है, change in x f of x with respect to x. ठीक है, so we have value of function at x0, that is f of x0. Now we have increased the value to x0 plus x. So that time value of function will be f of x0 plus x. Okay, so now this change is equal to f of x0 plus h minus f of x0 divided by x0 plus h minus x0. This is change. So this is called f of x0 plus h minus f of x0 divided by h, where this h is very less. Very less means limit h tends to 0. So f of x0 plus h minus f of x0 divided by h. So this is called dy by dx. So if this limit h tends to 0, f of x0 plus h minus f of x0 divided by h exists. Exists मतलब LHL equal to RHL. If this limit exists, function is differentiable. तो कल किसी का क्वेश्चन था, मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या इस टाइम बाद देखेंगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. एग्जिस्ट मींस इट इज फाइनाइट वैल्यू, है ना? इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, it means this function is differentiable. Okay, so when
we are subtracting f of x0 plus h minus f of x0. This is called progressive derivative. This is called progressive derivative. इन तीनों को साथ में लिख रहा हूँ. कितना लिखा? अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटा रहा हूँ. Okay. So one method is f of x0 plus h minus f of x0 divided by h or limit h tends to 0. है ना? This is called progressive differentiation. या progressive derivative. Okay. If it is f of, if this is f of x0 minus h minus f of x0 divided by minus h, where h tends to 0. This is called regressive. Why this is regressive? Because we are going back. F of x0 minus h. Okay. This is x0. This is x0 minus h. So this is f of x0. This is x0 minus h. At that time it is called regressive differentiation. Okay. And one more we can take, that is called central differentiation. Okay. We can stick to this only. So if this limit exists, this function is differentiable. If this limit exists, this function is differentiable. Okay. लिखा आप लोगों ने. Now let me solve one question. Question है PC का 2016 का. अच्छा, एक चीज और, if function is continuous at x equal to a, if function is continuous at x equal to a, it may or may not be differentiable at x equal to a. It may or may not be differentiable at x equal to a. But if it is differentiable at x equal to a, it must be continuous. समझते हैं इसको क्वेश्चन से. तो यही क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट फॉर्म भी है, तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा. है ना, ये लिखा आपने स्टेटमेंट, इसको मैं रख देता हूँ. Okay. So recently we have seen f of x is equal to mod x. It was continuous in this range minus a to n, and at x equal to 0 it was continuous. Okay. So f of x was x when x is greater than or equal to 0, then it was minus x when x was less than 0. Now if I differentiate it, it will be f dash x
So differentiation will tell the value of function at x greater than 0, it will be 1. Value of function at x less than 0, it will be minus 1. Okay, but differentiation at x equal to 0 is not defined. Why? See, we can say f dash x is mod x upon x. mod x upon x, ऐसा क्यों? इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस स्लोप विल बी कांस्टेंट बिकॉज ऑफ +1 and it is -1. But at x equal to 0, it is not -1, not +1. मतलब 0 minus f dash x at 0 minus कितना है? -1. And f dash x at 0 plus कितना है? +1. Understood? F dash x at 0 minus is -1. And f dash x at 0 plus is +1. What does it mean? F dash x at x equal to 0 does not exist. So, जो f of x equal to mod x है, this function is continuous but not differentiable. This function is continuous but not differentiable. ये आपका क्वेश्चन था, गेट में आया हुआ. ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से. Sir, can you repeat this slide? Okay, please. क्या हुआ? Our function was mod x, है ना? mod x का मतलब क्या है? The function is plus x when x is greater than 0, plus x when x is greater than 0, minus x when x is less than 0. So we have plotted the curve. When we have plotted the curve, this function is plus x means this is straight line, minus x means this is straight line. When I differentiate it, when it is x greater than 0, it will be +1. And when x less than 0, it is -1. So x before x equal to 0, it was -1, and before x equal to after x equal to 0, it is +1. ठीक है, तो एक +1 हो गया, एक -1 हो गया, लेकिन x इक्वल टू 0 पे क्या है? f dash x at 0 minus पे -1 है और f dash x at 0 plus पे +1 है. What does it mean? f dash x at x equal to 0 does not exist. It means f dash x at x equal to 0 does not exist. Means LHL, RHL not defined at f dash x. समझे शुभम? It means LHL is not equal to RHL for f dash x at x equal to 0. It means this is not continuous. अगर ये दोनों सेम होता तो वो x equal to 0 पर डिफरेंशिएबल होता. Come clear? Yes, sir. Thank you. तो ये क्वेश्चन था. दिस क्वेश्चन वाज एमी 2012, है ना? ये का एमी 2012 का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मैं रख करता हूँ ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमी 2016. एमी 2016 क्वेश्चन है f of x is equal to x square minus 3x minus 4 divided by x square plus 3x plus 3x minus 4. तो क्वेश्चन है values of x
for which function is not continuous. Not continuous. जल्दी 2 मिनट का क्वेश्चन कर दीजिए. हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए. Function is not continuous means the value of x where function does not exist. तो कब कब एक्सिस्ट नहीं होगा? When x square plus 3x minus 4 is equal to 0. 1 minus 4 perfect. When value of function is equal to 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस टाइम पे कंटीन्यूअस नहीं होगा. क्या होगा रूट? इसको आई कैन राइट x square one and minus 4. Very good. Very good. So I can write it x square plus 4 x square minus x plus 4x minus 4 equal to 0. So it will be x into x minus 1 plus 4 x minus 1 into 0 and x minus 1 x plus 4 equal to 0. So x equal to 1 then x equal to 1. So as x equal to 1 and x equal to minus 4, function will not be continuous. Okay, next. नेक्स्ट है CS का 2013 का. सबका हुआ ये? गेट में कैलकुलेटर नहीं होता है. गेट में कैलकुलेटर होता है वर्चुअल कैलकुलेटर ना. तो जितना अवॉइड कर सको वो टाइम ज्यादा वेस्ट करेगा. या तो उसकी प्रैक्टिस चालू कर दो अभी से गेट के कैलकुलेटर में ना. साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा वो, मतलब इक्वेशन सॉल्व नहीं करेगा. ओके, तो नेक्स्ट इज एफ ऑफ, ये है CS का 2013 का. f of x is equal to 2 x minus 1 और x plus 3 upon 3. ये x equal to 3 पे, ये x greater than 3 पे और ये x less than 3. फंक्शन f of 3 पे कंटिन्यूअस है क्या? नहीं. f of 3 minus f of 3 plus क्या है? If it will be, then function will be continuous at x equal to 3. है ना? सारी फंक्शन जल्दी. तो f of 3 given है 2. f of 3 is given. Yes, very good. f of 3 is 2. f of x, तो x tends to 3 minus, मतलब 3 के पहले क्या है फंक्शन को? x plus 3 upon 3. So it will be 3 plus 3 upon 3 equal to 2. Similarly, f of x when x tends to 3 plus क्या फंक्शन है? x minus 1 मतलब 3 minus 1 equal to 2. Yes, continue. Very good. It means f of 3 minus is equal to f of 3 plus is equal to f of 3. Means function is continuous at x equal to 3. Sir, for f of x equals to 3 minus, we are taking that 3 plus only, means like normally 3 plus or 3 minus, we are taking the 3 positive only. Yes, yes, yes. देखो उसका what that is mean. What is 3 minus? इसको मैं रब करूँ, इतना हो गया.
Yes, sir. What is 3 minus? Then what is 3 plus? Let me explain. If you are writing limit x tends to a minus f of x, you can write limit x tends to, you can write h tends to 0, and you can put, instead of x, you can put a minus h. मतलब a minus h is a minus, a plus h is a plus, where h tends to 0. Simple. Understood? So if you are finding out limit x tends to 3 minus, क्या था 3 minus से x plus 3 upon 3, you can write limit h tends to 0, and instead of x you can put 3 plus h, then h tends to 0, so you will put h equal to 0, so it will be. Understood? Yes, sir. Yeah. Similarly, if it is 3, ये 3 plus की लगा ना, 3 plus. If it is 3 minus, if it is 3 minus, you will put 3 minus, and again h tends to 0. तो अगर आपने very small value from the number डिडक्ट किया, तो that will be a minus. आपने बहुत स्मॉल वैल्यू उसमें एडिशन किया, तो that will be a plus. नेक्स्ट क्वेश्चन है एमी का 2015 का, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगेन एंड अगेन, मॉड एक्स को ही थोड़ा सा अलग तरीके से. f of x equal to mod x, how we can plot this? Like this, है ना? This is f of x equal to mod x. So question was value of function at x equal to 0. As we can see, this is minimum value at x equal to 0. This is minimum value of function at x equal to 0. यही क्वेश्चन था, नथिंग, है ना? तो ऑप्शन थे अलग अलग, मिनिमा होगा, मैक्सिमम होगा, या नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, बट वी कैन से दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 0 ऑफ मॉड x. ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड. ये था हमारा कंटिन्यूटी के ऊपर, है ना? इतने क्वेश्चन आए इसके ऊपर. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी में व्हाट वी हैव सीन, differentiability में what we have seen, limit h tends to 0, f of x0 plus h minus f of x0 or divided by h. This is for progressive, and another is regressive. Then it will be x0 minus h and divided by minus h. Okay. So in differentiation, first we will cover some formula जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमको सबको बेसिकली 11 12 से ही याद रहते हैं. जस्ट वी विल रिवाइज इट इमीडिएटली. ओके, so here I will write f of x, here you will write f dash x. Okay, so first function is x to the power n, second is log x, then log base ax, then e raised to x, then a raised to x. ठीक है, तो x to the power n का डिफरेंशिएशन n x raised to n minus, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, log ax को I can write
log e x अपॉन log e a, ठीक है। तो log e a तो कांस्टेंट रहा, log e a is a constant, and differentiation of log e x will be 1 upon it. So I can write 1 upon it, and I can write it, base will be 3. So log e, okay. Differentiation of e to the power x is 10 e to the power x, and differentiation of a to the power x is a to the power x. Log, okay. I'm developing it. कहाँ तक हो गया? a raised to x. Next is sin x, then cos x, then tan x, then sec x, cos sec x, then cos x. तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो यहाँ पर लिखते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cos x का माइनस cos x cot x, cot का माइनस cos x, ठीक है। यहाँ पर आते हैं cos x, यहाँ पर नेक्स्ट इज sin हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन cos hx, cos hx का माइनस sin x नहीं होगा, इट विल बी ओनली sin हाइपरबोलिक x, ओके। नाउ इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स। डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x इज 1 upon under root 1 minus x स्क्वायर। cos इनवर्स का माइनस होगा, क्यों? क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है? 5/2। तो इट विल बी 1 minus tan स्क्वायर का 1 upon 1 plus x स्क्वायर, तो cos इनवर्स x का माइनस 1 upon, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को क्या बचा है? sec इनवर्स x and cos इनवर्स। तो sec इनवर्स x का 1 upon x into under root x square minus 1 cos इनवर्स, cos इनवर्स का माइनस 1 upon x into under root x square। और जब से हम जो पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ mod x, differentiation mod x is x upon mod x, but x not equal to 0 because function is not differentiable at x equal to 0, otherwise it is differentiable. It is only not differentiable at x equal to 0. अब जल्दी से इसके अच्छे से कुछ क्वेश्चन करते हैं।
इसको रख करता हूँ ना, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं हुआ तो। फाइंड dy by dx where y is equal to a into cos t plus t sin t and x equal to this is x equal to a into cos t plus t sin t and y is equal to y is equal to a into sin t minus t. करिए फटाफट डिफाइन dy by dx. So what we will do to find dy by dx, first we will find dx with respect to dt. Okay. So first we will find dx. So a cos t का differentiation, what we have seen, minus sin t plus, now it is t sin t means multiplication of two functions. So first function will say differentiation of sin t is cos t plus sin t is same, then differentiation of t is 1. Okay. So sin t and this sin t will cancel out. So it will be a into t into cos t. This is dx and साथ में आएगा dt. So you can say dx upon dt is equal to at cos t. Then yes, perfect. So now dy will be a differentiation of sin t is cos t minus, जिसका ये हो गया है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालें, जिसका ये हो गया है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी. So dy will be a cos t then minus first function same. Yes, please Naveen. Okay. So differentiation of y will be a into sin t differentiation is cos t minus first function t is same. Differentiation of cos t will be minus sin t plus cos t same and differentiation of t will be 1. Okay. So as this is minus, I can multiply this minus inside this. So it will be a into cos t plus t sin t minus cos t. This cos t will cancel. So it will be into dt. Into dt will come. Dt will come. It is equal to a t sin t. Okay. This is dy. So what you would like to find out? Dy by, so dy by dx is dy is a t sin t and divided by a t
cos t, it means it is that is dr by dx. Now we have to find out d square y upon dx square. Now we have to find out d square y upon dx square. Send out in this very simple question. To send out, please tell me state and evaluate. Okay. So now we have to find out d square y upon dx square. So I can write it d by dx into dy by dx. So it will be d by dx, and dy by dx is 10. Okay. So d square y upon dx square will be, first we have to differentiate 10t, that is x square t into differentiation of t with respect to x dt by dx. And just now we have find out dx by dt is equal to how much it was? Dx by dt was a into t into cos ti, isn't it? So now d square y upon dx square is x square t into dt by dx, matlab it means 1 upon at cos t. It means we can say sec cube t divided by at. Add out in this, सभी का होगा ओके, तो I'm removing it. Huh? Okay, next question. Next is log 4x square minus 1 d by dx of log 4x square minus 1. So this will be called successive differentiation. First we have to differentiate it like a log z. So it will be 1 upon z. So it will be 1 upon 4x square minus 1, and then differentiation of 4x square minus 1. So it will be 8x divided by 4x square. Okay. Next, d by dx of x plus 2 upon x plus 1. So for this we have to use du upon d formula. So that will be denominator square. Denominator will same, first differentiate numerator minus u same, it will be du. Okay. So square of denominator, that is x plus 1 square. X plus 1 will be same, and then x plus 2 differentiation, that is 1 minus x plus 2 same, and differentiation of x plus 1 is 1. So it will be x plus 1, it will be minus 1 upon x plus 1.
डाउट? कुछ नहीं? ओके, थोड़ा चैट में बोलते रहिए सो दैट आई कैन गेट सम फीडबैक फ्रॉम यू। शुभम, गुड डाउट? ओके, गुड गुड, अभिनव है आज, वेरी गुड। राज और आकाश? नहीं सर, पता नहीं। राज और आकाश नहीं है? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इज d by ds of s upon s square plus omega square. d by ds of omega upon s square plus omega square. d by ds of s upon s square minus करिए बराबर. This for differentiation will be useful in Laplace also. Whenever we see Laplace. And what is d by ds of omega upon s square minus. करिए. Okay. So first one is d by ds of s upon s square plus omega square. So s plus omega square square s square plus omega square same differentiation of s into 1 minus s same and differentiation of s square plus omega square is 2s. So this will come s omega square minus s square divided by s square plus omega square. Second, कोई मिस्टेक होता है तो प्लीज लेट मी नो ना. Some mistake of minus plus, please let me know. Now differentiation of omega upon s square plus omega square. So denominator square as omega is constant, so we can directly do. There is no need to put this formula. I can write it d by ds of omega will be taken, it is constant. So x square plus omega square minus 2. So it will be minus omega s square plus omega square minus 2 into 2s. Okay.
will be minus 2 omega s divided by s square plus omega square का okay. Similarly, third and fourth you can do. I am not solving this here because this is only s square minus omega square. Okay, so these two you can solve it and you can give answer in chat console and you can give answer in WhatsApp group. Okay. Now next question is y is equal to e raised to a sin inverse x. E raised to a sin inverse x. Okay, and we have to find out dy by dx at x equal to 0, d square y upon dx square at x equal to 0, d cube y upon dx cube at x equal to 0, and 4 times differentiation of y at x equal to 0. Is there or not? Voice is not audible. Hello. Hello. Voice is not audible. Hello, now is it clear? थोड़ा इंक्रीज हुआ? सभी को प्रॉब्लम है? कितना प्लीज चेक योर ओके वेट अ मिनट. Somebody, Kunal is telling it is fine. Please check your system voice also and try to. Akansha is also telling fine. Chetna and Manpreet, please check your earphone and system volume also because I am getting very less. Yeah. अच्छा, वॉइस का थोड़ा इशू है. एक्चुअली आज टुडे आई ऑर्डर्ड माइक्रोफोन आल्सो, तो नेक्स्ट लेक्चर से वो इशू बहुत कम हो जाएगा. ओके. ओके, मैं थोड़ा आई विल इंक्रीज माय एट माय एंड आल्सो ना. ये सिस्टम का कुछ हो सकता है बट मैक्सिमम पीपल आर टेलिंग इट इज ओके. ओके, ठीक है. So let me increase my voice. Okay, so the function is y equal to e raised to a sin inverse x. So we have to find out dy by dx at x equal to 0. So first of all, let me find out y of 0. Y of 0 means put x equal to 0. So e raised to a and sin inverse 0. So sin inverse 0 is 0. So e raised to 0. That is 1. So y of 0 is 1. Now we will differentiate y with respect to x. It is successive differentiation. So differentiation of e raised to a sin inverse x
is same. Now we have to differentiate a sine inverse x. So it will be e raised to a sine inverse x into a same, and differentiation of sine inverse x is 1 upon under root 1 upon 1 minus x square. Okay. So I can say this is y1 is equal to. Now can we put e raised to a sine inverse x is equal to y, and ay upon under root 1 minus x square. Okay. Any doubt? So y1 at x equal to 0. y1 at x equal to 0 is a into y of 0 under root 1 minus 0 is equal to a into y0 कितना था 1, तो y1 0 क्या हो गया a. It means dy by dx at 0 is a. Okay. लिखा सबने? I'm removing it. So we will be required it again as this function will be required. Okay. So now for y2 what we will do? We will square it. When we will square it, it will be y1 square into 1 minus x square equal to y square a square. Okay. So LHS will be, now we are differentiating complete equation. So y1 square is first function, that will be same 0 minus 2x plus 1 minus x square same, and differentiation of y1 square is 2 y1 into y2. We have used u into v function is equal to a square constant 2y y. है ना? किसी का आंसर आया y2 at 0? I can't hear anything, FP. फर्स्ट चेक योर ये जो साउंड सिस्टम है जूम में उसमें एक बार चेक करिए, बिकॉज सर इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा कभी कभी डिस्टॉर्ट हो रहा है। हाँ सर बहुत हो रहा है अभी। ये सिग्नल का प्रॉब्लम है क्या? 2 मिनट देखिए। सिग्नल भी अच्छा है इंटरनेट का। सर बाकी लोग जो बोल रहे हैं ना उनका वॉइस आपसे ज्यादा आ रहा है। अच्छा तो मैंने सबको म्यूट करके रखा है। नहीं हाँ हाँ मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरा आवाज आपसे लाउड है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके अभी ना सही बोला। अच्छा 2 मिनट रुको। I can't hear anything, sir. Hello. हेलो 2 मिनट। अभी इज इट इंक्रीज? थोड़ा इंक्रीज हुआ? हेलो कुछ इंक्रीज हुआ अभी? कॉल वाया डिवाइस ऑडियो किया आज के नीचे क्लियर हुआ थोड़ा ना? हाँ थोड़ा हुआ। Maybe
क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने सारा वॉइस इंक्रीज करके रखा है। ऑडियो सेटिंग इज फुल, इनपुट लेवल परत बोलना रे बाप्पा अभी हुआ क्लियर? नहीं अंकुर आवाज नहीं आ रहा अभी? नाही मी नाही म्हणतो ना, मी काय म्हणणार आहे, काय मिला आता येईल, काय झालं बाबा, काय पेढे नदीला पूर, पेढे नदीला आला पूर, पेढी पेढी ओके ओके, आप अभी लेकिन मंत्रित आपका क्लियर हुआ? सर सौरभ यादव को म्यूट करो, कौन है? मंत्रित आवाज क्लियर हुआ? ओके ओके, नाउ इट इज क्लियर ना? चलो हे दोन नाही शकत ना. नाउ आप सभी अपना म्यूट कर लीजिए। ओके, तो मंत्रित आवाज क्लियर है ना? सब अभी सभी को क्लियर है? ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। so where we were differentiating e raised to a sin inverse x, we were differentiating e raised to a sin inverse x, this is y, so we have differentiated dy by dx, so we have got e raised to a sin inverse x into a 1 upon under root 1 minus x square. So again we have put e raised to a sin inverse x is equal to y. So dy by dx we got a into y upon under root 1 minus x square. So dy by dx को I have written y1, so is equal to ay under root 1 minus x square. Okay. Now we squared it, so y1 square multiplied with 1 minus x square is equal to y square a square. Now again we are differentiating with respect to x. So y1 square first function से 1 का differentiation 0 minus differentiation of x square is 2x plus 1 minus x square same, then differentiation of y square is 2 into y1 into y2. y1 is dy by dx and y2 is d square y upon dx square is equal to a square constant, differentiation of y square is 2y, and then differentiation of y is y1. Okay, so we have to find out d square y upon dx square at x equal to 0. So put x equal to 0 in equation. So y1 0 square, how much we got that? y1 0 was a, y1 0 we got a. y1 0 was a into minus 2x
or what we are putting x equal to 0, 2 0 plus plus 1 minus 0 into 2 y1 0 is a y2 0. We have to find out y2 0. We have to find out is equal to a square to y0 was 1 then y1 0 is a. ठीक है, तो ये तो हो गया 0. This comes out to a y2 of 0 is equal to 2a cube. तो y2 0 कितना आया, a, ठीक है, y2 0 is a square. Why we are solving this? Because this will be used in Maclaurin series. अभी जो application of differentiation में we will see maxima minima, Taylor series, Maclaurin series, this all type of series we will see. So that time this type of function will come into picture. Yeah. So we are studying differentiation also, and we will use this differentiation in those series also. Okay. So we are putting y equals to 1 in the right hand side. Yes, yes, good, good, good. Okay. So why we are putting here? Because our y was e raised to a sin inverse x. Okay, so we are putting x equal to 0. So y of is e raised to a sin inverse 0 is 0. So e raised to 0 is 1. So instead of y, we are not putting 1. So instead of y of 0, we are putting 1. Okay. Clear हुआ? Yes sir. है ना, e raised to 0 is 1. सर स्क्वायरिंग क्यों किया बोथ साइड पे? स्क्वेयरिंग क्यों किया? बिकॉज अंडर रूट का डिफरेंशिएशन इज क्लमजी, मोर क्लमजी. तो आफ्टर स्क्वेयरिंग थोड़ा सा थिंग्स विल बी गो इजी. ओके सर. ओके. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज आई एम रिमूविंग इट, डिलीटिंग इट. ओके, तो नेक्स्ट है log 1 plus x. So you have to find out this is y. So we have to find out y of 0, y1 0, y2 0. है ना? What does it mean? Value of function means y of 0. We will put x equal to 0. So it will be log 1. Log 1 is 0. Next we have to find out y1 0. Means first we have to differentiate with respect to x, and then we will put x equal to 0. y2 0 means d square y upon dx square. Then we will put x equal to 0. Okay, solve it. What about y3 and y4? So that can be done. Those are not required this time. When we will solve Maclaurin series, the same question we will repeat. So for this time we are restricting ourselves to y2 and y1 only. जो इक्वेशन था उसको ही अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वी कैन गेट y3 and y4. Same question we will take in Maclaurin series. Akshay is good.
1 minus 1. Yes. So dy by dx will be 1 upon 1 plus x. So y1 at 0 is 1 upon 1 plus 0, that is 1. D square y upon dx square is minus 1 upon 1 plus x square. So y2 0 will be minus 1 upon 1. Okay. And similarly, d cube y upon dx cube I can find out. It will be 2 upon 1 plus x cube. So it will be y3 0 will be गजाननाची now if any doubt ask in chat only. सबको अलाउ नहीं कर सकते नोट डालने को। नहीं अभिनव, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, है ना। y3 is 2, तो 1 minus 1 then 2 then 6 फैक्टोरियल में बढ़ते जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट विल बी 2 into 3 ऑल्सो, है ना। नेक्स्ट टाइम 4 करेंगे तो -2 into 3 हो जाएगा। ओके गुड, आई रिमूविंग। अभी वॉइस का तो प्रॉब्लम नहीं है मंत्री। एंड वन मोर, जिनको प्रॉब्लम का चेता आइए, है ना। अगर फिर से प्रॉब्लम है तो बताना। ओके, तो नेक्स्ट वन इज 10x f of x is 10x. Okay, so f of x is 10 of x. We have to find out f of 0, f dash 0, f double dash 0, f triple dash 0. Yes, and f 4 times differentiation 0. Correct. So f of 0 is 10 0. Instead of f of 0, if I write y0, it will be more convenient. Y0, that is 10 0, and 10 0 is 0. Okay, now y1 is differentiation of 10x, that is x square. So y1 0, how much y1 0? Y1 0 is x square 0, x square 0 is 1. Now y2 is 2 sec x into sec x 10x. Yeah. I have one more way of writing this one, y1. So I can write 1 plus 10 square x. Actually, I would like to remove 10x. I would like to remove 10x. So कैसे remove करेंगे? y1 is 1 plus 10 square x. So I can write y1 is equal to 1 plus 10x को I can write y. So it is equal to 1 plus y. So now things will be very easy. How?
Now y1 is 1 plus y square. So y2 will be 1 का differentiation 0 plus 2y1. Now if we will find out y2 of 0, it will be 2 y0 y1 0. y0 was 0, so total 0. So y2 0 is 0, isn't it? Now we have to find out y3. So what we will do, y2 is equal to 2y1. So we will differentiate it. So y3 will be 2 will be common. Y differentiation of y1 will be y2 plus y1 same. Then again y1 differentiation is y1. So it will be 2 y2 plus y1 square. Any doubt till now? पूजा आपका आया है 0102. वेरी गुड. नेक्स्ट इज 2. परफेक्ट. आज अली है कि नहीं? मुशर्रफ मैंने देखा नहीं है अभी तक. आज अली नहीं है. तो मयूरेश कहाँ है वेदांत? कल भी नहीं कहता है. ओके. सो y2 0 is 2 into y of 0. Sorry, ये लेफ्ट हैंड में y2 0 plus y1 0 square, that is 2 into 1. Again you can solve for y4. Okay, solve it y4 के लिए आप बताइए कितना आ रहा है. and y5 भी निकाल लीजिए. Find y4 and y5. Find solve it for y4 and y5. y4 0, perfect answer. y4 is 0 and y5. Okay. This was y. So y4 is 2 y2 difference is y3 plus y2 same, y1 plus y1 square is 2 y1 and y4 0. y4 is 0. You will solve it, you will get y4 0. Okay, now y5 will be, you solve it, you will get 16. Okay, you can solve it and you will get 16. Please check. Very good. Yeah, you can solve it. Again you have to differentiate it by parts only and you will get next class. Next is differentiation by substitution. I am removing it. इसका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Let me go ahead. Okay. So next is differentiation by substitution.
differentiation by यस यस बोलिए इस पे चैट पे बोलिए differentiation by substitution. So question number 1 is d by dx of sin inverse 2x upon 1 plus x square. Second question is d by dx of tan inverse under root 1 plus x square plus 1 upon x. C is cos inverse x minus x inverse upon x plus x inverse. Okay, let me solve first this question. So differentiation by substitution is a topic, and these three are the questions. So before solving this question, let me see some pattern to solve this type of question. Let me see some sort of pattern to solve this question. Okay, I will write again this question. So first pattern is, if in function you get a square minus x square, if you get a square minus x square, so directly put either x equal to a sin t or a equal to x equal to a cos t. What will happen? It will be a square minus a square sin square t, so it will be a square cos square t. Or when you will put x equal to a cos t, it will be a square minus a square cos square t, it means a square sin square t. So it will solve up to some manner. Okay. Next is, if you see x square plus a square type of pattern, then directly put x equal to a tan t or a cos t. Okay. If you see, instead of a square minus x square, if you see x square minus a square, you can put a square t or a cos. So we will use these three type of pattern in solving our question. Very good, Kasaleka. Not as a minus 1 upon 2 into 1 is very good. We know it's very good. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन लिखा, ये लिखा है यहाँ तक. Please say somebody else. Okay. So now we will solve our first question, sin inverse 2x upon 1 plus x square. So what we can put? 1 plus x square means in first question we are seeing this type of pattern. So we will put x equal to tan theta or tan t. Okay. So what we will do? We will put x equal to a. Here there is no a because 1 plus x square. So we can put directly x equal to tan t. Tan theta will be more convenient. So d by dx
sin inverse, which will be 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. अच्छा, I will write all the question again, है ना? तो first there sin inverse 2x upon 1 plus x square. So it will be d by dx sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square is sec square theta. So it will be d by dx sin inverse 2 sin theta upon cos theta and sec square is 1 upon cos square. So 1 cos will cancel. So it will be d by dx sin inverse 2 sin theta cos theta. So many problem. Please let me know if any. D by dx sin inverse it will be sin 2 theta. So resultant will be d by dx 2 theta. Again I can put 2 can be taken common and theta is tan inverse x. And differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x. Sin 2a होगा ब्रैकेट में, करेक्ट. So sin inverse sin 2a will be 2a or 2 theta and theta is tan inverse x. So answer is 2 upon 1 plus x square. तो किसी को डाउट नहीं है? Yes, Akansha. Second question was y is equal to tan inverse under root 1 plus x square plus 1 upon. Again it is 1 plus x square pattern. So again put tan theta. इसको रख कर रहा हूँ ना, तो सभी का हो गया. स्क्रीनशॉट ले लो. 1 2 3 4 5 आई लो ना, हुआ सबका? ओके. Now again in this question we can put x equal to tan theta. So y is equal to tan inverse under root 1 plus tan square theta plus 1 upon tan theta. So it will be tan inverse, it will be sec theta plus 1 upon theta. So it will be tan inverse 1 upon cos theta plus 1 upon sin theta upon cos theta. So y equal to tan inverse 1 plus cos theta upon sin. ठीक है? Now we have to use two formulas of trigonometry. What are those? इसमें लिखा काटा अगर हम we have reduced our y equal to I'm removing it. ये सब लिख रहे हैं ना साथ में. अगर कुछ मैं जल्दी रफ कर रहा हूँ तो प्लीज लेट मी नो, तो मैं थोड़ा सा साइड लगा दूंगा. ओके. तो as we know cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta.
10 cos square theta plus sin square theta is 1. So can I write 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta? So if theta is replaced by theta by 2, it will be 1 plus cos. So cos 1 plus cos theta I can replace by 2 cos square theta by 2. Similarly, sin 2 theta I know 2 sin theta cos theta. So sin theta I can write 2 sin theta by 2 in cos theta. So y is equal to, I can write tan inverse 2 cos square theta by 2 upon 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So 2 cancel, it will be tan inverse cos theta by 2. Any problem till now? ऐसा कभी नहीं. So I can write this is equal to y is equal to, I can write y is equal to tan inverse cot. So I can write tan pi by 2 minus theta by 2. So tan inverse tan pi by 2 minus theta by 2 will be pi by 2 minus theta by 2. And what is theta? Tan inverse x. Okay. हुआ सभी का? So y is equal to pi by 2 minus theta is tan inverse x by 2. So dy by dx is 0 minus 1 by 2 1 upon 1 plus x square. So it is minus 1 upon 2 into. ठीक है? हाँ मन बोलिए. क्वेश्चन उसमें चैट पे बोलिए जो भी डाउट है. बड़े आंखें यहाँ तक क्लियर है का? अमन आप कुछ पूछ रहे हैं? ओके. So next question was y is equal to cos inverse x minus x inverse x plus x inverse. So I can write cos inverse x square minus 1 upon x square कर लो, है ना. ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया और x स्क्वायर प्लस 1 हो गया. So in this type of question always see denominator. So again it is again similar question. Again you put theta x equal to 20. आज सुमन नहीं है, सुमन आंसर नहीं दे रहा है.
x equal to tan theta. Again you put present. Okay, start. Come answer आ रहा है तुमसे. Increase your speed. So x equal to tan theta. So y is equal to cos inverse x square will be tan square theta minus 1 and denominator में tan square theta plus. This is direct formula or you can solve it. This is direct formula of cos 2 theta minus cos 2 theta. So tan square theta को I can write sin square theta upon cos square theta minus 1 and denominator में it will be sec square theta. So it will be cos inverse sin square theta minus cos theta is equal to cos inverse minus cos 2 theta. अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं. व्हाट मिस्टेक दे यूज्ड टू डू? साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा. साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा I can write minus, but cos inverse cos minus theta is not minus theta. Okay, so cos inverse cos minus theta is pi minus. Always remember. Okay, tan inverse tan minus theta be minus theta. Okay, so this y we got is cos inverse cos minus 2 theta. It means y is pi minus 2 theta. Then solve it. Send out. लिख पा रहे हो ना? जो भी जल्दी रफ तो नहीं कर रहा. If it is fast, please let me know. शुभम, कुछ लैग मत करना. So y is equal to pi minus 2 theta. Theta is tan inverse x. Again dy by dx is 0 minus 2 1 upon 1 plus x square. So answer is minus 2 upon 1 plus x square. This is differentiation by substitution. कि जो भी कल और आज हम जो करेंगे उसका आपको मोस्टली कल टुमारो इवनिंग तक आई विल गिव सम 5 to 10 क्वेश्चन एज अ टेस्ट. आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे या फिर आप मैं ऐप पे भी इसको अपलोड करूंगा तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम देयर आल्सो. So this type of differentiation what we have seen, that is differentiation by substitution. ये तीनों क्वेश्चन क्लियर थे? So please scroll down. Yes, please. Okay. Amir, please take a screenshot now. I am moving ahead. So please can you view that link on WhatsApp group? Okay.
डन करना ओके चलो गुड so now next is we have seen two type of differentiation a single type of differentiation that is differentiation by substitution next is logarithmic differentiation next is logarithmic differentiation abhi we have seen in formula differentiation of a raised to x differentiation of a raised to x इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं ओके क्या है टॉपिक logarithmic differentiation logarithmic differentiation so if y is equal to a raised to x if y is equal to a raised to x what we do we will take log both sides so log ey is equal to log e a raised to x okay now I can write log y is equal to log m की power n is n log m so I can write x log e x okay so now we will differentiate this equation so it will be 1 upon y log y by differentiation then y is dy by dx again log ea is constant and differentiation of x is 1 so what is dy by dx dy by dx is y into log e and what is y we have put a raised to x yes understood it's very simple so dy by dx d by dx of a raised to x is a raised to x log c similarly solve differentiation of x raised to x and differentiation of cos x to power yes solve it x to power x 1 plus log x x to power x 1 plus yeah Suman very good okay so y is equal to x raised to x so log y is equal to I can write log e okay so differentiation of log y is 1 upon y log y is equal to first function x differentiation it was cos x की power x second question is cos x so x first function x log x का differentiation 1 by x plus log x and differentiation of x is 1 this is 1 by y and dy by dx so dy upon dx equal to y into 1 plus log x and y is x to the power x 1 plus log. Now, what is second question? Differentiation of cos x to the power x. Okay. I'm deleting it.
1 2 3 4 5 इसका नहीं हुआ ठीक इसके बाद तो second is y is equal to cos x to power x. So what we will do? First put x to power x equal to z. So y will be cos z. So dy by dx will be first differentiation of cos z, that is minus sin z, and z is x to power x. Now dz by dx, that is differentiation of x to power x. This just now we have solved. Minus sin x to power x, and differentiation of x to power x was x to power x 1 plus log. Command cos की power cos x की power x नहीं, ओहो गलत कर दिया. This is right. कमांड देखो क्या मिस्टेक हुआ, मुझे का भी गलत. है ना. This is simple question. First we will solve cos का difference, that is minus sin x, and then differentiation of x to power x. Just now we have solved that. I guess this is very much clear. Why we are putting equal to z. Okay, what we are, if we won't put, then again it is okay, directly we can do. Just for understanding I have put x to power x equal to z here, otherwise there is no need. I can directly put here, if directly dy by dx equal to first differentiation of cos, that is minus sin, and then differentiation of x to power x. This is direct method, and then minus sin x to power x, and then differentiation of x to power x is x to power x 1 plus log x, like previous question. Shivam, is it clear? It is just to explain that this is successive differentiation. I have put x to power x equal to z. Without substitution आ रहा है गौरव, कैसे अलग आ रहा है? देखो सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल. फर्स्ट डिफरेंशिएट y, so this is dy by dx is equal to, forget x to power x, just see cos. So differentiation of cos is minus sin, and its angle is, let us say, theta. So x to power x. Now we have to differentiate x to power x. So again, when we differentiate x to power x, it won't be x to power x minus 1, because this x must be constant. This won't happen. This is wrong. So differentiation of x to power x in previous question, how we solved. So similarly, we will get x to power x 1 plus log x. ठीक है गौरव, बोलिए. Let me go ahead. जिसका हो गया है उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ओके गुड. x to the power y is equal to e raised to x minus y. Find dy by dx at x equal to 2. Find dy by dx at x equal to 2. Sorry, find dy by dx. आपको थोड़ा सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज x इक्वल टू पे वी कैन फाइंड आउट फाइंड e रेज टू p फाइंड dy बाय dx एट e स्क्वायर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमको सॉल्व करना। शुभम आपको क्लियर हुआ? शुभम, अमान, पूजा, प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके गुड। I am removing it. This is our new question. So first we will take logarithm. So log x to the power y. अक्षय क्या है आंसर? It will be log e. सिमरन एंड सिद्धि, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? सब क्लियर है? नहीं विकास, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा देखो और क्लियर और अच्छा हो सकता है। y log x equal to x minus y because log e is 1. Yes, very easy. So y log x is equal to x minus y. So y log x is equal to x minus y. Yes, good. So I can write it y plus y log x is equal to x. Okay. So I can write y is equal to x upon 1 plus log x. 1 by 2/9 perfect. आकांक्षा इसका है, थोड़ा गलती हुआ। अक्षय is not giving answer. सुमन का नहीं आया बेटा। Okay, good. 2/9 is correct. Very good. So now we will find out dy by dx is equal to square of denominator 1 plus log x square 1 plus log x times differentiation of x is 1 minus x times इसका 0 plus log x का 1 by x. So we will get log x upon 1 plus log x का square. Now we have to find out, this is y1 na, sorry, this is the other y1 at e square. So it will be log e, x की जगह कुछ कर देंगे e square 1 plus log e square I square. So it will be 2 because log e is 1, so divided by 1 plus 2 square. It is 2 upon 2 square, this is 2 upon 9. Perfect. अक्षय लेट हो गए? ओके गुड, वेरी गुड। ओके, तो हमने कौन सा देखा? डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन logarithmic differentiation. Third type of differentiation is function is parametric form. जो first question we have taken na, x equal to a into some cos t and y equal to some sin t. This type of question is called function in parametric form.
function in parametric form. So that type of question is third type of. Okay. So this is very clear to you. Doubt है किसी को? शुभम को doubt? सौरभ, रोहित? I don't know whether there Rohit taking it. Yeah, Shubham, very good. So I am deleting this. Okay. So next is function in parametric form. In parametric form. In parametric form. So this type of question means very simple question. If x equal to a some function of sin t or any other variable, and y is also function of other parameter, then find dy by dx. So this type of question comes into function differentiation of function in parametric form. Okay. So now dy by dx. So first we will find dx, that is a same differentiation of t is 1 plus sin theta differentiation cos t into dt, because we are differentiating with respect to t. Similarly, dy is a constant, differentiation of 1 is 0 minus differentiation of cos t minus sin t, so it will be plus. So dy upon dx is equal to a sin t divided by a into 1 plus. So it will be sin t upon 1 plus cos t. Similar question we have seen. So 2 sin t, I can write 2 sin t by 2 cos t by 2, and 1 plus cos t को I can write 2 cos square t by 2. 2 cancel, cos t by 2 cancel, it will be 10 t by 2. Let's check. Okay, no doubt. The question can come to find the value of dy by dx at particular t. So if we will put dy by dx at t equal to, let us say, pi by 2, तो क्या हो जाएगा? 10 pi by 4, and 10 pi by 4 is 1. If question will be asked that find the value of dy by dx at t equal to pi by 2, so that time answer will be 1. Okay. Now one more question of differentiation in parametric form. सभी को क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? Can we move ahead? सौरभ, आकांक्षा, श्वेता, अक्षय, शुभम, पूजा, सिद्धि. Yes, Abhinav. Very soon. Okay. So next is differentiate. Differentiate x to the power 3 x cube upon 1 minus x cube, but with respect to x to the power 2. थोड़ा सा different question. Okay. This is differentiate x cube upon 1 minus x cube with respect to x square. With respect to x nahi, with respect to x square. So very simple. We will put
y is equal to x cube upon 1 minus x cube, and x square को I will put z. So we would like to differentiate y with respect to z. So what we will find out? We will find out dy by dx, and we will find out dz by dx, and we will divide. So we will get dy by dz. Okay. So first find dy by dx and then dz by dx and divide it. So dz by dx directly I can put 1 upon 2x. dz by dx is 2x. dz by dx is 2x. Now differentiate dy by dx. So this is u upon v. So 1 minus x cube square, 1 minus x cube square, 3x square minus x cube, it will be 0 minus 3 x. Now solve it. Here you will get 1 upon 2x, and here you will get, I guess, x square here. 3x square 1 minus x cube square. Please correct me if I am wrong. Because बताइए, Suman, is it correct? 3x upon 2 1 minus x cube. Very good, Akansha, perfect. Here. So dy upon dz will be 3 upon 2, this is x, and 1 minus x cube square. Abhi remind me, initially we have seen differentiation, differentiability we have checked. So is this function differentiable at all the points? Or we can say this differentiation is not existing at x equal to 1. Because at x equal to 1, 1 upon 0, 1 upon 0 infinite. Perfect, Akansha. So at x equal to 1, dy by dz will not exist. Does not exist. Okay. So almost all type of differentiation we have covered. Only single question is remained. So Abhinav, this is last question. The last form of differentiation is implicit differentiation. Last type of differentiation is implicit differentiation. यहाँ तो सबका क्लियर है? शुभम, सौरभ, everybody clear? Siddhi, Simran, you both are okay with this? Yes, good. तो इसको मैं डिलीट करता हूँ. Good thing. चलो, next. So let me move ahead. Manpreet, now voice is clear, ना? Yes, वो शायद तक कुछ सेटिंग में इशू होगा, I don't know. But still I ordered microphone also. So from next lecture I will use microphone. So or sound quality will improve. So next is implicit differentiation. Implicit differentiation. Implicit differentiation. Okay. So implicit and explicit difference क्या है? Implicit and explicit. If I can represent function in this pattern, means all x will be one side and all y will be at the other side. मतलब y is equal to, I can write sin inverse x plus x square plus 3x plus 2 like this. यहाँ पर केवल we have x term and LHS I have only
y term. So this is called explicit function. While implicit function, what does it mean? Implicit function का मतलब होता है the function is mixed, means I cannot differentiate, I cannot make it separate. y और x को I cannot do separate. जैसे x y के साथ नहीं है ना? If I take this that side में y और x को I cannot separate. So this type of equation is called implicit equation, and when I will differentiate this type of equation, it will be called implicit differentiation. So I have to differentiate complete equation for this. So differentiation of x square will be 2x plus differentiation of xy will be x per function y का differentiation dy by dx plus y same x का differentiation 1 plus y square differentiation is 2y dy by dx equal to 0. So now this dy by dx x plus 2y dy by dx is equal to minus 2x plus 1. So from here I will get dy by dx is equal to minus 2x plus y upon x plus 2. Okay. So this type of differentiation is called implicit differentiation. Okay. So any problem in today's lecture? Please let me know. मैं आपको टेस्ट